say that I am surrendered and then they are surrendered to everything. This is not how the surrender happens. Surrender does not mean that you take away your awareness, put it in the pocket and then surrender. No. You do the aware surrender, otherwise the surrender will also stay half. है ना? अगर सरेंडर भी कर रहे हो तो चैतन्य भाव से करो, अदरवाइज वो भी पूरा नहीं होगा. और अगर सरेंडर भी पूरा नहीं होगा तो उसका भी कोई प्राप्त नहीं होगा आपको फल. एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ नॉन ड्युअलिटी यू आर नॉट इवन सीकिंग अ फल. एटलीस्ट देन बी वाइज. So astral projection has different layers to it. Yes, it is a science that can be learned and practiced. Now understand कि if it is a science that can be learned and practiced, why to do it? What is the benefit? ऐसे हम सोते हैं तो हमको कभी कभार सपना आ जाता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कोई बात नहीं, अपना अपना फ्लेवर है सपने का. ओके, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की क्या जरूरत है? तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने से क्या होता है? व्हेन यू गो टू योर स्लीप कॉन्शियसली एंड यू हैव सर्टेन कंट्रोल ओवर योर ड्रीम्स एंड टू व्हाट प्लेसेस यू ट्रैवल, it influences the energy you are manifesting. One. Secondly, it is very good for your brain health. It is very good for your eyes. It is very good for the healing of your inner system. Because every time you do the astral travel, you get in contact with your astral body, your actual parent, जिनकी आप शेडो हैं. आप उनसे मिलकर आते हैं. जब आप उनसे और जितनी बार आप उनसे मिलकर आते हैं, कुछ तो अच्छा होता है आपके भीतर. कुछ बीमारी होती है जिसका इलाज शुरू हो जाता है. कोई प्रश्न जिसे आ जाना चाहिए आया नहीं, वो आ जाता है. ठीक है. कोई आंसर जिसका क्वेश्चन बहुत दिन से घूम रहा है, उसका आंसर मिल जाता है. और आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है. इन व्हाट सेंसेस? योर फोकस गेट्स बेटर. यू आर एबल टू हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंडसेट because you are able to think out of the box, because your astral body is of course more trained than you are, and it gives you the science, the knowledge, the reflection of a lot many places. हो सकता है आपकी इस जो शेडो अभी यहाँ पर है, दूसरी कहीं पर सेम एस्ट्रल बॉडी की प्रोजेक्शन पड़ रही हो जहाँ पर आप थोड़े से और हायर मॉडिफाइड फॉर्म में हैं. जब आप ट्रैवल करके आते हैं एस्ट्रल बॉडी से, देन यू आर एबल टू गेट दैट कंसेप्ट एज वेल. ठीक है. So it's 11:11. So that is one benefit of astral projection. Another benefit of astral projection is it takes you better into your spiritual journey. आपकी spiritual जो journey चल रही है, यात्रा चल रही है, उसमें आपको बहुत सहायता मिल जाती है जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, क्योंकि आपका जो एस्ट्रल सेल्फ है that is definitely higher than at what place you really are at this time. तो वो आपको एक नेचुरल सा पुल मिलता है to move forward in that direction. एक थोड़ा सा आइडिया, एक कंसेप्ट मिल जाता है. Yeah. Now how you do astral projection? अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक आप लोग को कभी सिखा दूंगी. अभी एक छोटा सा मेथड बताती हूँ which is very safe, which anyone can try. So how you do it? You have to find a place which is very safe and comforting. You have to make sure that the temperature is very optimal there. And then you lie down. There should be a little dark environment, चाहे आप दिन में करें चाहे रात में. और जब आप सोना शुरू कर रहे हैं, then what you have to do first, in few steps you have to make your breath very slow, very gentle.
जैसे कि वो नींद में होती है पर आप सो नहीं रहे, यू हैव टू स्टे कॉन्शियस. Then slowly you have to start that sleeping process from the toes. अपने पैरों को पहले एकदम ढीला छोड़ के उन्हें सोते हुए देखिए, फिर अपने thighs को, फिर then your waist, belly, chest, your arms, your hands. Then look, see your shoulders sleeping, your neck, your face. तो पूरी तरीके से आपके पूरे शरीर में till your head you have that environment created for sleeping. And then you're almost sleepy. You can hear your breath. अगर आप थोड़े बहुत खराटे लेने की आदत है तो हल्के से वो भी आ रही है आपकी, वैसे भी breath बन गई है, and that also you are able to hear. The moment you are there, then become conscious about the room in which you're sleeping. First take your consciousness there. Keep yourself in that state and think about how my bed looks like. How is the head side of my bed? What colors are there? What is just next to my bed? If there is a balcony, what are the curtains looking like? How does the balcony looks like? How is the washroom attached? What are the things? एकदम closely observe कि कौन सा शैम्पू का सोप का बॉटल कैसे अरेंज्ड है, एकदम ट्रेस करिए. जितनी डिटेलिंग में आप देख सकते हैं, यू आर actually enhancing your visualization through this. It is very good for the students also. I always make students do this. It helps them study in a better way. They are able to learn the concepts. So observe very keenly the colors, the shampoos. कोई बॉटल को एकदम ध्यान से ही ट्रेस कर लीजिए कि उस पर लिखा क्या है, किस कलर से लिखा है, ब्रांड का लोगो कैसा बना है. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके once you are completed with that room, then you take yourself. Now you want to take yourself to your workplace, go ahead there. You want to take yourself to someone else's place, take yourself there. And then visualize their room or your workplace or anywhere. Visualize everything, how the door is looking, how you open up the door. Take your entire consciousness there completely. And then see everything. If there, what is the temperature there? Try to feel that temperature. Try to feel that what is the energy. जैसे आप हाथ खोल करके अगर कभी वो होते हैं कहीं पर तो आपको कैसा महसूस होता है, वहाँ की एनर्जी वाइब महसूस करते हैं. Even when you're astral traveling, try to feel the vibe of that place, the energy of that place. Then you see that person. What are they doing? And how do they look at that time? What is happening in their place? If it's a cooking time, go to their kitchen. If there's a pressure cooker, listen to that sound. Go to all the details. And once you feel like कि यार मन में ऐसा remembrance आए कि where is my body, है ना, where am I sleeping if I'm here? The moment that thought will come, you will come back to the same room. Don't immediately rush to your body. Try to come back to the room first. Again, as you put the feet in the same room, try to feel the temperature of the floor through your feet. And then slowly go back into your body. As many times you practice this, the going outside of the body and coming back, it will become your practice. Then even when the time comes, you will be able to leave it consciously. That is the ultimate thing you do. But before that also many occasions will come when a little detachment from the body and mind gives you a little peace. So that time also you can